तो हेलो गाइस, konnichiwa। इस इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा इताची की स्टोरी चैप्टर 2, जिसका हम पार्ट 2 चैप्टर 1 पार्ट 2 कवर हम कर रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप दे दूँ तो पिछली बार जो हमने कवर किया तो उसमें क्या हुआ था। इताची का भाई पैदा हो चुका है सासुके, और साथ में इताची ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसकी ट्रेनिंग से कोई बहुत कुछ होता है। दोनों फ्रेंड बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इताची और सासुके घर पे हैं और 9 से हमला कर दिया फुकाकू जो है अपने हेडक्वार्टर्स में। वो उसकी मां रास्ते में उनको लेने जा रही है। वो लोग घर से बाहर निकल चुके थे तो इसलिए अब वो जा रहे हैं। पूरी स्टोरी जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगी। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इस बार मैं पूरा यहाँ तक कवर करूँगा इसको, जहाँ तक आपको ये दिख रहा है इस पेज तक। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या होगा, तो बने रहिएगा। और आप इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है। Itachi, Mom. Thank goodness you are safe. Mikoto waved her arms tightly around Itachi, who was standing in the lane in front of house, holding Sasuke. I didn't want you to worry if he run away, and then you come home, so I waited for you. His mother noticed tears spilling down her face, eyes that had been narrowed with the tension of having to protect his little brother. Relaxed to some degree, but it was fleeting. When he noticed something closing in from behind his mother, those eyes quickly regained their original grimness. Mom, he practically threw Sasuke to his mother and then he flew. A brother tosses into the air by 9 tails, stirs near their house, and the pieces dance above their heads. Once Shang was falling towards his mother back, he looked down at her, floating Sasuke to her chest. Her surprised eyes chased after him. He called through the cushion. There is he wondering just what was happening to make Itachi leap up so suddenly. The rock was enormous, large enough to easily crush her mother and her 2 children. I will protect you, he murmured. He cleaned his first tightly. The physical arts of the ninja were not about strength. He might have a small child of 5 years body, but yet undeveloped. But along as he managed to need his chakra properly, he can't smash even this enormous rock. He planted his first eye in the air. Chakra filled his arm, covering his faint blue flames. The rock slammed into Itachi first and exploded with a stroke. Even a child could effortlessly destroy boulders as long as they simply kept up their ninja training. Sobered in a range, breathless, he landed steadily on the ground. Are you alright? He hesitated, turned around. Unable to console her surprise, his mother started as Itachi's his Susuke's eyes. His mother was a Juni, which was precisely why she was amazed at his instruction action. It's dangerous here. Let's go to where everyone is right. As if pulled to her feet by his voice, his mother stood and Itachi reached over to take her hand. You haven't even started a decade yet, but you already do something like that. You really are your father's son. She no doubt was in him, but it was time for that. A sense of duty filled his heart. He had to get the mother and brother to a safe place all around him. He called her skies of birds and the shoots of horse voice mixed with the roar of destruction. It was overwhelming. People running around trying to escape, leading a man who had lost his arms, yelling
a flow ninja, a young woman starting blankly at a mountain of rubble, like a wounded with strange cut, a child wailing loudly trying to rouse a narrow cold mother. In the core of rain, Itachi had a ear, sprinting, screeching. The hand steadily ran that far, and yet he was having trouble breathing over lead. On the scene before his eyes was the battlefield he had seen when he was 4. A dull pain set deep into his eyes, just like the moment on the battlefield. Waves of the power pulsed behind his eyeballs. He felt like the world was livid crimson for a moment, but the sensations quickly substituted Itachi. His mother called him for behind, having not having noticed something strange in her son. I'm alright, mom. He ran desperately. He ran to save the massive violence of ninja tales from the bottom of his heart. He prayed for the strength to stop war. He wanted to be strong ninja. तो यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर जो है ताची की जो माँ है वो उन दोनों के पास पहुँच जाती है। वो उनको बोलते हैं चलो ऊपर वाले का शुक्रिया है कि तुम बच गए। और वो और जो इताची वो देखते हैं कि इताची ने अपने भाई यानी कि सासुके को कस के पकड़ रखा है। और इताची और उसकी माँ बोलती है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम में कुछ हो, इसलिए मैं जल्दी घर आई तो तुम्हारे लिए। और वो कहते हैं कि और इताची कहता है कि आई डिडंट वांट टू वरी इफ़ यू रन अवे एंड देन यू कम होम सो आई वेटेड फॉर यू। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं थी, अगर तुम चले जाती और अगर तुम आ भी जाती तो मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करता रहता। फिर उसकी माँ के थोड़ी सी नम टीयर्स यानी कि आँखों में से आँखें थोड़ी टीयर्स वाली आंसू वाली हो जाती है। और वो देखता है कि कुछ उसको साउंड आती है पीछे से, और वो इताची को अपनी वो सासुके को अपनी माँ की तरफ फेंकता है और पीछे की तरफ वो हवा में उछलता है, तेज़ फॉलो करता है ऊपर और देखता है क्या, तो उसे दिखता है एक बड़ा सा पत्थर आ रहा है। और वो अपनी माँ को बोलता है कि इताची को पकड़ो, उसको चर्च से लगा देता है और वो उछल के सीधे पत्थर पे अपना पंच मारता है और उसके जो हाथ में से चाकरा वो फ्लो होता है, चाकरा दिखता है उसके हाथ में से फ्लो होता हुआ, तो वो पूरे पत्थर को ऐसे चूना चूना कर देता है। और फिर उसके बाद उसकी माँ यही सोच रही होती है कि ये कैसा हो सकता है, क्योंकि इताची 4 साल का है और 4 साल के बच्चे के लिए ये करना इतना मुश्किल है। उसकी माँ एक जूनिन है तो वो देख पाती है उसके मुंह के ऊपर, वो यही सोच रही होती है कैसे। और वो है ना, जब वो पत्थर तोड़ रहा था तभी वो तोड़ते तोड़ते बोलता है मैं तुम्हें बचाऊंगा, मतलब बोलता नहीं है, ऐसे बड़बड़ाता है। बड़वाना में मुरमुरे का मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब धीरे ऐसे बोलना जैसे किसी को समझ में ना आए। तो बस ऐसे ही होता है। और फिर उसके बाद वो नीचे आता है, उसकी माँ से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, और वो पीछे की साइड घूमता है अपनी माँ के साथ। उसकी माँ सरप्राइज हो चुकी होती है पूरी कि इताची इतना छोटा है और फिर भी, और उसकी जो आँखें हैं वो अब थोड़ी सारिंगन जैसी हो रही हैं, मतलब देखो तुम 4 साल से ऐसी होने लग गई है कि उसके अंदर सारिंगन जाग रहा है। तो उसकी माँ बोलती है सही नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है, यहाँ से हम चलते हैं, जहाँ सब लोग हैं वहाँ चलते हैं। वो लोग वहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में वो लोगों की आवाज़ें सुनता है, लड़कियों की लड़कों की, जो लोग बेचारे डर रहे होते हैं। और ये पत्थर जो आया था ये 9 टेल्स की वजह से आया था। जो 9 टेल्स है वो पत्थर वो बहुत तबाही मचा रही है जो भी है, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो यहाँ पर यही होता है और वो यही सोच होता है यार कि क्या होगा। उसकी माँ ने उसे पनिश नहीं करा, उसकी माँ बोलती है कि तुमने अभी तक अकेडमी ज्वाइन नहीं करी, फिर भी तुम इतना कुछ कर पा रहे हो, तुम अपने पापा की तरह है, तुम अपने पापा के बेटे हो। तो उसकी माँ उसे एक तरह से मतलब बोलती है, या उसके लिए ये होता है कि उसकी माँ उसको अपने पापा से कंपेयर कर रही है, पर उसकी माँ उसे वो दे रही है कॉम्प्लीमेंट, यानी कि शाबाशी है जो भी कहो तुम। तो उसकी माँ ने उसे मारा नहीं क्योंकि उस टाइम ये सब सही नहीं था। और जो कुछ हो रहा था, चाची को बहुत सारी आवाज़ें सुनाई आ रही थी, वो डरा हुआ था। उसे
बैटलफील्ड यानी कि युद्ध का मैदान का सीन वापस याद आने लगा और उसके दिमाग में वही छाया जा रहा था। और फिर वो एकदम से रुक जाता है, डर के मारे पूरा डरा हुआ होता है वो। उसकी माँ उसे आवाज़ देती है पर वो नोटिस नहीं कर पाता और वो देखती है कि उसके बच्चे को कुछ हो गया, मतलब कुछ अजीब लग रहा है उसके बच्चे के अंदर। तो वो बोलता है मैं ठीक हूँ माँ। और वो फिर 90s की तरफ देखता है और उसके हार्ट की तरफ कुछ लगता है उसे क्या हो रहा है। और वो सोचता है कि मुझे इतनी ताकत मिल जाए कि मैं इस वॉर को रोक सकूं। एंड अब हम आगे बढ़ेंगे क्या होता है। 4 figures were lined up in the conference room of the Ukage resident, the third Ukage, Hiruzen Shimura Danzo from the Hanbu and Homura and Konamaru from the Monster. The sudden chemistry under control as the station Hiruzen looked at the three comrades, the figures of his deeper now, the opened his mouth, the fourth and his five Kusina gave their life to Sina until they saved the place. Listening with the soul looked down so pick it up where the former Ukage left off, but Konoha took a dispersion blew the likes of which didn't see when running the Great War unless we revealed immediately the order place might take this opportunity to take this form. Closer Homura was planning to make arrangements for that right away, and there are conditions I have heard very much like to see put in place. This right hall of had convert bench, dancer, sports, left eye, related question, heroes and meet easily. Ishi gets see a question in his own eyes. I want to know the resident of Uchiha clan on the edge of the village. Danjo said, what? Hirozen glared on him, broke forward. Danjo didn't flinch but instead contribution dismissing. You are aware that only the Sharingan of Uchiha can control Ninetales. Are you saying it was the Uchiha who spawned Ninetales? I am. Danzo scared and Hiruzen held his breath. The two consonant bucket over the friends back and forth with closest mouth. The treatment of Uchiha's during the Great War, Fugaku refusing to comment when the fourth was declared on the dissatisfaction with the village has been growing among the Uchiha clan in the recent years. I don't agree. Members of organization have been looking carefully into the movement of Uchiha. It is a fact that the Uchihas are displayed that's a long standing. That's not all. The self-assured Danzo cut illusion of those who lived throughout the Great War, playing despair that even a great genius like Wicked Eye Fugaku must resign himself to begin a head of military force that disappointed with the village. Will somebody become a serious disappointed and lead an attack on Konoha? Still, that said, don't you think you begin with stay in the very 90s incident that fall of Uchihas? This is not kind of the things you can simply leave just because you have not positive proof. Heroes and listen, the only thing that can control until the Uchiha Sharingan, that is fact. Heroes and Furet at any rate, we must gather the Uchiha's clan together in one spot and push them to the edge of the village. And we shall do it now while we can. It the name of town planning after Rindle's stack. Success with restlessness of man. Who am I? The darkness of Anbu. The other three will only remain. तो यहाँ पर क्या होता है
कि अब जो है 90s को जो हमारे फोर्थ होकागे यानी कि मिनाटो नामिकाजे और उनकी वाइफ, मेरे को नाम तो अभी याद नहीं, यहाँ में दिया था, उनकी वाइफ और इन दोनों ने मिलके नाइटर्स को रोक लिया। तुम्हें पता ही है, तुमने ये नारुतो में देखा होगा कैसे रोका था। पढ़ते पढ़ते मैं भी थोड़ा सा दुखी हो गया क्योंकि वो सीन बहुत दुखी वाला था, जहाँ एक माँ अपने बच्चे को जन्म दे रही है और फिर आगे मैं पता ही है नारुतो ने क्या क्या झेला। तो वही सब हमें बताया जा रहा होता है कि नाइनटेल्स का अटैक अब रुक चुका है, सील हो चुकी है, लेकिन हमने 2 लोगों को खो दिया और ब्लैक को इससे काफ़ी दुख पहुंचा था उस टाइम, क्योंकि ये 2 कितना फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में नहीं था, थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में। क्यों? क्योंकि उस टाइम कितने उन्होंने अपना उकागे नहीं खोया था, पर उकागे अब खो चुका है और ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए थोड़ा वो था। अब वापस हिरोजन उकागे बना और डांसो वहीं पर ही था और वो लोग बात कर रहे थे। तो एक रूम था, काउंसलिंग थी, वहाँ पर बैठे हुए थे, तो वहीं डांसो उनसे कहता है हिरोजन से, वो उससे बात करता है। उन दोनों के बीच में यही बात हो रही थी। वो कहता है कि हमें उच्चा क्लैन को ख़त्म करना चाहिए, उच्चा क्लैन वालों की गलती है। तो हिरोसन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। इसी चीज़ पर उन पर बहस कर रहे होते हैं। डांसो बोलता है कि ऐसा है क्योंकि नाइनटेल्स को सिर्फ सारिगन कंट्रोल कर सकता है और वो उनके पास ही है। तो वो कहता है कि उनमें अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सारिगन ऐसा वहाँ पर है नहीं, और वो ऐसा क्यों करेंगे विलेज के लिए। लेकिन इन दोनों में बहस चल रही होती है। वो उससे कहता है कि तुम उखागे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए विलेज की रक्षा के लिए। वह हिरोजन उसकी बात नहीं मानता और हिरोजन बोलता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता किसी भी हालत में, क्योंकि वही है। पर डांसो बहुत बोल रहा होता है और फिर हिरोजन चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता, और वो बोला जा रहा होता है, बोली जा रहा होता है। और फिर उसके बाद हिरोजन बोलता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ कितना भी ताकतवर हो, वो नहीं करेगा ना ऐसा। और फिर उसके बाद फिर से वो डांसर बोलता लास्ट में यहाँ पर कि हमें सारे उच्चिया क्लैन के लोगों को यहाँ एक साथ लाना चाहिए और फिर उन्हें मार देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए, पुश देम टू एज ऑफ विलेज। मतलब या तो उन्हें विलेज से बाहर निकाल दो या उन्हें ख़त्म कर दो, ये है। तो फिर उसके बाद इनमें यही चीज़ चल रही होती है और हमें पता है गांधो के पास कैसी काउंसलिंग है। तो आगे बताइए तुम्हें क्या होगा। ना मैं आगे पढ़ता हूँ। मैं पूरा डिटेल में इसको कवर नहीं कर रहा, मतलब एक ही लाइन कवर करूँगा तो चलिए 1-2 घंटे से ज़्यादा ही हो जाएंगे। It was satisfied with their new homes. They were a fair distance from the center of the village, but Nakano Shrine, where the clan original was within the comfort and best of all, they were right on the edge of blaze, so there was green all around them. Finding place to train was no trouble at all, and if just felt it a little, he could cross the border of the village beyond which river seals rolled across the landscape. He also thought it was a good, quiet place for his baby brother to grow up. Wherever the adults especially felt reflective, even scientists decided that rather than begin scared of all the overbridge, the members of the clan would be brought together and new compound pulled. A stream of young ninja has been coming and going from his father's place. Distribution, procession, first accretion. Itachi had only received words from his father's house, and he was aware of the reason. The adult didn't think this move was a happy one. One of their clan was suspected to be the perpetrator of Nine Tails attack, and as a result, they had been pushed as a group to each of blade and not completely even about to try to kill him. Itachi was not separated at all. The father and the others were of threat, but once a thing decided they had been the end of it, the clan was altogether relaxed. So the healthier choice was to think instead about trying to make the
compound environment even better. The village was a disaster after the destruction influenced by the Nightingales. It is just now Czechland going to through the difficult times. A great number of people had seen loved ones pass on, had them many had lost their homes and we had no idea what they were going to do. Saul of Czechland considered himself lucky given that his government was set up for them. Before Monsieur, we had taken from a lot of other people who had lost everything in their catastrophe. Itachi called contain his despair at the understanding and narrating disfaction of these adults. All right, I am going. His father's voice come from behind. Itachi was sitting eating supper with his mother and Sasuke, but of course his little brother still called it solid food. Which is in his high chair, Sasuke moved his head from side to side, having only recently grown strong enough to hold it up. He turned big round eyes on his father and started forcefully at Tachi's lifting rice for his wall to his mouth. This voice is putting something white in the mouth of a long stick. What on the earth is supposed to be doing? The boy gazed so intense Itachi almost wondered if she weren't thinking grow up house like this. This baby wasn't yet a year old, but he had strong eyes that clearly accompanied his thought as well. What about Super? His mother asked, looking past Itachi. Itachi took his own invitation to turn around and caught a glimpse of his father's stairs first through the tiny gap in the sliding door. I will eat out and I will backslide you, so you go ahead to be without me. Alright, well, see you later then. Bye. He headed to his mother farewell and his father, who reached beside him. Unlike his little brother, his father's gave away no hint of what he was thinking. Next year, the academy you make sure you keep training hard. Alright. Sasuke raised his voice aggressively in imitation of Itachi. His father looked at the baby and nodded before disappearing completely behind the sliding door. The family is in the kitchen starting eating again. तो यहाँ क्या होता है, तो कुछ लोगों ने अब सबने सोचा होता है, जो 6 क्लिन के जितने भी लोग हैं सबने जो दांजो कह रहा था वही होता है, ये लोग सब मिलेंगे और वही होता है जो दांजो का लग रहा था। तो ये सब मिलते हैं, साथ में आते हैं और ये लोग यही सोचा होता है कि हमारे में से ही कोई है जिसने नाइनटेल्स से हमला करवाया विलेज पे। तो ये सब ने एक कुछ टीम बनी होती है, यंग क्लैन करके बनी है। तो वो लोग ढूंढने लगे किसने हमला करवाया है नाइनटेल्स का विलेज पे, क्योंकि ऊंचाई वाले ऐसा कर सकते हैं, उन्हें भी पता है कि सारिंगा नहीं है जो नाइनटेल्स को कंट्रोल कर सकता है। तो वही सब ये कर रहे हैं और इताची को सब पता लग चुका होता है। इताची के पापा का जो रूम है वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं, कुछ लोग आए होते हैं इताची के पापा के पास, ताकि इताची के पापा को भी वो उनकी टीम में ले सकें एज अ लीडर, क्योंकि फुआ को जा को सब जानते थे एज अ विकेट आए, तो इसलिए वो चाहते थे। तो उन दोनों के बीच में बात चल रही होती है। फिर बात चलते चलते धीरे धीरे ऐसी बात चल रही होती है, इताची सब सुन रहा होता है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी आवाज़ें इताची सुन पाता है, जिनमें से वो 3 वर्ड सुन पाता है जो हमें बताए गए हैं, डिस्ट्रक्शन, फ्रिक्शन, फ्रोज, ऑक्यूशन। अब मुझे इनका सही मतलब तो नहीं पता, पर फ्रिक्शन का मतलब होता है झूठा इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लगाया जा रहा है उस क्लैन के ऊपर। फ्रिक्शन का मतलब कि उन्हें बोला जा रहा है कि तुम में से ही है, और डिस्ट्रक्शन यानी कि जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है उनकी वजह से। 3 जो वर्ड हैं जो इताची को समझ में आते हैं, मुझे पक्का मतलब नहीं पता, जो मुझे पता था मैंने बताया आपको। फिर उसके बाद ये लोग खाना खा रहे होते हैं, तो इताची के पापा इताची की तरफ देखते हैं और इताची
साइड में से हल्का हल्का देख रहा होता है सब कुछ, मतलब पहले बातचीत, फिर उताची के पापा हैं वो भी खाना खाने आ जाते हैं। वो लेकिन खाना खा के जा रहा होता है अपने वापस। जो सासुके है वो उसकी तरफ देखता है और उसके हाथ में राइस बॉल होता है, तो वो वही खा के जा रहा होता है। तो सासुके आवाज़ तो निकालता है, पर सासुके भी इतना बड़ा नहीं हुआ, वो भी 1 साल का भी नहीं है। तो वो जा रहा होता है ट्रेनिंग के लिए। ताची फिर खा पी के उसके पापा उसकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम मेरे बिना जाओगे आज भी? तो वो कहता है हाँ मैं जा रहा हूँ भाई, और मिलता हूँ। और वो निकल जाता है। और उसके पापा बोल रहे होते हैं अगले साल तुम ज़रूर अकेडमी में पहुँच जाओगे। एंड उसके पापा फिर सासुके की सब देखते हैं। सासुके जो है कुछ करके आवाज़ निकालना चाहता पर निकल नहीं पाता, और ये सब होता है। फिर उसके बाद वो सब वापस खाने लग जाते हैं। अब ये ख़त्म होने वाला है, फिर उसके बाद हम कल 3rd पार्ट में डिस्कस करेंगे। What exactly are the grown-ups doing so late at the night? Itachi loses the person of his only friend. Susui started off the Hokage monument in the distance as blue smiles swirling up cones of his foot. We are sitting on cliff outside the blaze. In the sport only they know about. Below the cliff rising to the ground, there was a river that meandered around from behind the Hokage mountain and flowed out of the blaze. But the time it reaches Itachi and Shisui, the water flowed much faster and disappeared than it was starting to point in the way. I am Jenny. Shisui said, I still focus of the distance. He turned toward the quality distance Itachi and continued softly. So I go to the adults meeting. They meet regularly at Nakano Shrine. Itachi wanted to ask what the study Shisui was talking about, but he was afraid, and no words come out. Shisui looked down. It was something you don't have to know about it. So Itachi started to his friend and covered his eyes. Heavy hair hanging over the lane. Let it be a guess. Itachi murmured over and over in his heart. तो अब लास्ट की इन लाइनों में होता है कि इताची जो है लेट नहीं था, ज़्यादा रात हो रही है, तो इताची अपने दोस्त के संग होता है और वो लोग वेट, तो वो पूछता है सिसुई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? तो इताची पूछता है उससे, और दोनों एक ही दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। वो लोग वहाँ बैठे होते हैं एक माउंटेन की वहाँ पर, वहाँ से रिवर भी बहती होती है। तो वो बातें कर रहे होते हैं, तो वो बताता है सिसुई के तुम्हें पता है मैं भी आज वहाँ गया था अडल्ट्स की मीटिंग में। अडल्ट्स यानी कि वही यंग वाला जो ग्रुप है उसकी मीटिंग में, क्योंकि मैं भी एक ज्ञान हूँ तो मैं गया था। तो वो बताता है कि हम ये हमेशा मिलते हैं नाकानो श्राइन के पास। नाकानो श्राइन, तो नाकानो श्राइन के पास सब मिलते हैं। तो इताची उससे पूछता है कि क्या होता है वहाँ पर, तो पर इताची बोल नहीं पाता। वो पूछना तो चाहता है कि होता क्या है, पर वो बोल नहीं पाता। तो ससुई पूछता है कि तुम्हें पता नहीं है कुछ क्या अभी तक जो तुम्हें पता होना चाहिए। और इताची फिर अपने दिल में कुछ मन में मतलब कुछ बोलता है, और वो बोलता है हैवी हेयर हैंगिंग ओवर द क्लीन लेट बी अ गेस। तो इसका मतलब है एक बहुत तगड़ी हवा जो है सब कुछ सफ़ा कर रही है, चलो इसका पता लगाते हैं। तो इसका मतलब शायद से डांजो से जुड़ा हुआ है, क्योंकि डांजो हमें पता है क्या करना चाहता है। तो बस इसके लिए आज के लिए इतना ही। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट चैप्टर में। 3rd चैप्टर हम कवर करेंगे, जो कि हम फिर से शायद से 2 पार्ट में रखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी बड़ा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब कल के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, और खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।